everybody. Today the topic of discussion is a right to freedom, which is embodied in Article 19 of the Constitution of India. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, why do we require freedom? Why should we have right to freedom? What for? Why it is so important? And what does it mean when we say that I'm free? Means, can you say that you're free? Or you're still under some kind of control? Control of anybody from your family? Fine. So this control has to be there or should not be there? Why? Why? Or पैसा चाहिए भी है डिपेंडेंट हाँ देखो जो राइट टू फ्रीडम है ना दिस हैज बीन डीपली इंग्रेन्ड इन द ह्यूमन एक्सपीरियंस वन इट इज आई मीन सो फंडामेंटल to the individual as well as to the society and as to the nation's growth as well. Fine. तो अगर मान लो आपको एक फ्रीडम नहीं है अपनी मर्जी से अपना कोई काम करने के लिए, you are bound. ठीक है? You will not be able to say live your aspiration the way you want. You want to crack UPSC, but somebody is now pressurizing you that you are not to prepare for this exam. What would you do? How would you feel? नाउ अगर आपको आपकी मर्जी से जीने का, चलने का, खाने का, उठने का, पहनने का राइट नहीं दिया जाता फ्रीली, देन इट मीन्स और यू रिमेन इन अ कंस्ट्रेंट लाइक तो इट मीन्स योर अल्टीमेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ is curtailed, is limitized. One aspect that I have to have a right to marry as per my choice. I should have a right to wear the way I want to wear. Whatever I want to eat, wherever I want to move, whatever I want to do, whatever I want to express, opine about certain thing, I have to have a freedom. Now, see the second aspect. If these freedoms are not curtailed or limitized by the state, then what would happen? If you say that I will not abide the traffic regulation and drive as per my own will, my own whims and fancies, no, it's not possible. The state is required to regulate your conduct. Fine. Now, the law has to strike balance between two rights, that is your right to freedom and the interest of the society, societal interest. Because ultimately the state, the paramount function which the state has to perform is to extend the welfare to the society as a whole. In the right to freedom of speech and expression, under the garb of it, you cannot abuse somebody, you cannot defame anybody, you cannot provoke anybody. Okay? You cannot trigger the sense of incitement in others You cannot raise the slogan against the national security integrity. Okay? You cannot cause a public chaos, nuisance. You can't. रात को आपने स्पीकर चला लिया, आंटी पुलिस बुला लेगी और 4 बजे तक डांस कर रहे हो, 7 वालों की नींद हराम कर दी, तो freedom to not to such extent. So it means if right to freedom is a fundamental right, but it is subjected to certain restraints. The Article 19(1) talks about 6 freedoms. Earlier there were 7 freedoms. Now the 6 freedoms are enshrined under Article 19(1). But all these freedoms are curtailed, subject to 19 clause 2 to 6. If I say that 19(1)(a) talks about the freedom of expression and speech, then it is curtailed by 19(2). Right? So when you are to talk about
expression and speech as a right to freedom, then you have to read it with Article 19.2 that it is subjected to restraint. Fine. So we will be discussing each and every expression which has emerged. तो पहला जो है आपका all citizen. तो पहला तो ये लिखो कि this Article 19 is available to the citizens only, not to the non-citizen. ठीक है. तो पहला तो citizen को ही. A1 कर रहा है बात freedom of speech and expression की. Now it has two words, speech and expression. Okay. Now, if I say that speech means whatever you are uttering, okay, whatever you are, believing and then saying, in whatever manner, it could be by gesture also, fine. It could be in writing, it could be by speaking, through any mode. But when we say that express, now newspaper, if it's publicizing something, it is speaking or expressing? Why? You can express your opinion, your beliefs freely. Nobody is going to stop you, but only subject to 19.2. Okay? पहले तो आप 6 राइट्स लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करना है. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज 19.1A. सेकेंड आप लिखें असेंबल पीसफुली. थर्ड आप लिखें फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अर्लियर द कोऑपरेटिव सोसाइटी द वर्ड वाज नॉट देयर, इट हैज कम थ्रू एन अमेंडमेंट. ठीक है. तो नाउ यू हैव अ फ्रीडम टू एसोसिएट और टू फॉर्म अ यूनियन और टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट मूव फ्रीली, बट ऑल दिस again I will say all these rights are subject to limitations. Three, four judgments I'll dictate you to give the concept clarity. एक तो आप इसमें श्रेया सिंगल ऐड करेंगे. देखो आर्टिकल 19 को बोला जाता है इट्स अ bedrock of democratic society, because where the society is free to express, to voice for personal development, societal progress and democratic governance. This right is must. ठीक है. तो 3 एस्पेक्ट हैं, पर्सनल, सोसाइटल एंड अल्टीमेट नेशन गवर्नेंस. This constitutional cooperative society, this was added by way of 44th Amendment 1978. Just a moment. इसको काट देना. By way of 44th Amendment 1978, in fact, the right to property, to hold and acquire the property, this was abolished. And it was converted into a constitutional right under Article 300A. तो
अभी तक we have studied like the right to freedom जो है that is a basic right, democratic value को express कर रहा है, but it could be controlled and regulated and curtailed. Fine. Subject to 19.2 जो 19.1a है that is to be read and like in the light of 19.2 only. ठीक है. अब मैं अगर आपसे सिंपल ये पूछूं कि व्हाट डज इट मीन जब हम बोलते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुड बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19.2, व्हाट डज वर्ड रीजनेबल मीन्स? रीजनेबल आपका 14 में भी आया वर्ड रीजनेबल, ठीक है, तो आप लिखो वर्ड रीजनेबल रेफर्स टू इंटेलिजेंट केयर एंड डेलिब्रेशन. Now see, the matter is before the court. Reasonable restrictions has been imposed. You have challenged it in the court of law. The court has to see whether this restriction is reasonable or not. Not only this, but court has to see whether it is warranted or not, whether it is required or not. Okay? So your freedom cannot be curtailed so easily. State cannot act as per its whims and fancies. Now court ultimately has to come and see that whether this restriction, which is now being agitated, is valid or not. Okay? And whether it is warranted or not. So court has to see the two tests. One, that whether it is reasonable, and second, whether it is required. ठीक है, आप लिख लो restrictions imposed under Article 19.2 are to be decided not only to the extent and nature, but also whether it is warranted or not. Now, suppose you're a court now. What is this test before you to assess the reasonability? What other factors you will consider, like while assessing कि state ने restriction impose की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपके पास टेस्ट क्या है उसकी reasonability के लिए? तो उसमें आप लिखो the court has to see DPSP's arbitrary and excessive nature, just balance between restriction imposed and social control, social values and social needs, again as we discussed earlier, there has to be a reasonable nexus between the restriction imposed and object sought to be achieved. There has to be a nexus between the restriction imposed and object sought to be achieved. Now we are in a democratic nation. Can they criticize the policies or the functioning of the government? Fine. So 19.1a is at most required. For the proper functioning of democratic process. अब आपको ना कई बार ऐसे में पूछा गया होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन सर्कुलेट एंड दे कैन पब्लिश द न्यूज़. नो अगर मैं बोलूँ फ्रीडम ऑफ प्रेस के पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट इज इंक्लूडेड इन इट और नॉट, तो क्या आंसर है आपका? फ्रीडम ऑफ प्रेस दैट इज इंक्लूडेड इन दी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच और नॉट? क्यों? Okay, or now लिखो the fourth pillar of the democracy
puts an additional check on three organs. Now, it's the duty of the press to provide comprehensive and objective information on all aspects of social, economic, and political life. If in case the paper is not published, how would you come to know that as to what government is doing and what is happening in the country? कैसे पता लगेगा आपको? Social, political, economical, whatever is happening, the press has to publicize it. ठीक है? So we can say that press seeks to advance public interest by publicizing facts and opinion without which an electorate cannot make responsible judgment. Therefore, it is the primary duty of the court to uphold the freedom of press, and invalidate all administrative action which interfere with the freedom of press. Now, there are so many cases you will find that जिसमें number of pages आप इतना छापोगे, circulation आपकी इतनी होगी, paper का price इतना होगा, इस तरह के मतलब rules form किए थे, तो वो time to time struck down होते रहे. The number of cases you will find. You cannot suppress the voice, ठीक है? Or you cannot dictate this kind of terms like to the paper कि आप इतने पेज छापोगे और इतनी advertisement लोगे or whatever. हमदर्द दवा खाना very important judgment in that, ठीक है? जुडिशियल प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करने के लिए केस में बोला गया था कि यू कैन फ्रीली रिपोर्ट द जजमेंट्स एज टू वट एवर इज हैपनिंग. उसमें कॉन्सेप्ट ये था, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली. द जुडिशरी वट एवर इज डूइंग दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, फाइन, एंड इट शुड गो इन द पब्लिक डोमेन एंड पब्लिक शुड हैव टू हैव एन एक्सेस. ठीक है, इसीलिए हम ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए. तो जजमेंट का नाम लिख लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज विजय भास्कर. इसमें कोर्ट ने होल्ड किया था कि देयर इज freedom in reporting judicial proceeding was allowed. Now, एक और इवॉल्वमेंट जो बहुत ज़रूरी है 19(1)(a) को समझने के लिए, that is right to know. Why? Right to know क्यों ज़रूरी है? Right to know is a part of freedom of speech and expression. Now, why it is important? आप आज किसी सरकारी दफ्तर से इंफॉर्मेशन मांगते हो अंडर RTI और वो बोल देते हैं सर सीक्रेट है, वी विल नॉट प्रोवाइड यू, सॉरी. What would happen to your right to know then? Why do you want to know it? Because you really want कि ये ग्रांट, ये प्रोजेक्ट, ये इसका स्टेटस बता दो, ये ग्रांट कहाँ यूज़ हुई ये बता दो, इसमें से कितना पैसा आपने किस काम के लिए खर्च किया ये बता दो. मीन्स गवर्नमेंट आपकी चुनी हुई है, आपके लिए आंसरेबल है, तो देयरफॉर यू वांट दैट इन दी अफेयर्स देयर हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंसी एंड यू शुड बी ट्रांसपायर्ड अबाउट एज टू व्हाट दे आर डूइंग. देयरफॉर राइट टू नो इज़ इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में हमने फॉर्म किया इसी चीज़ को लेके. ठीक है, तो आप लिखो इसमें, सिटीजन हैव राइट टू नो द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, but it is not absolute right. Now,
if you have been seeking such kind of information, the transmission of the same can cause threat to the security or integrity of the nation. They can deny you. फाइन. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे आप पढ़ोगे, कुछ एक लिमिटेशंस हैं उसमें जिसमें गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है. सो यू हैव बीन सीकिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ एम्बेडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, or you want to know the status of investigation when it is undergoing, like it's not yet been completed, you can't. Fine. So there are certain restrictions you will find. ठीक है. तो not जो RTA है, that has been meant, further add करो, RTA has been meant to promote openness, transparency and accountability in the administration. So now the political parties or their candidates, Simon, they have started coming to you to seek vote. कि हमें को वोट देना. अब आपको नहीं लगता कि हमें जानना चाहिए कि जो हमारा कैंडिडेट है उसके क्रेडेंशियल्स, उसके एंटीस्टेंट्स, उसका करेक्टर, उसकी एसेट्स क्या हैं? ठीक है. राइट टू नो. केस का नाम लिखो. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002. Union of India versus Association for Democratic Reforms 2002. Voters have right to know the antecedents of a candidate contesting election. Telephonic tapping is allowed or not? In some cases. Very good. कौन से केस में हेल्ड हुआ है? लिखना चाहते हो नाम के नहीं रिक्वायर्ड आपको? लिखो. राइट टू प्राइवेसी के साथ इंट्रोड्यूस करता ना ये. टेलीफोन टैपिंग PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. It is allowed only on the permissible grounds, not permitted otherwise. और ये बंद और स्ट्राइक कॉल करना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, इज इट अलाउड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल? It's not right to freedom, but it is allowed. लिखो. By calling of band by a political party is unconstitutional. देखो, in order to secure your life, liberty, so COVID है. अब nations ने declare कर दिया कि बंद रहेगा, कोई बाहर नहीं आएगा. That is permissible. But a political party is calling for बंद, ठीक है? It's not permissible. It's unconstitutional. केस का नाम लिख लो आप. CPI versus भरत कुमार 1980. Film censorship allowed or not allowed? Good. केस का नाम लिखो. के आभास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. प्री फिल्म सेंसरशिप इज जस्टिफाइड. पोस्ट तो रिलीज हो गया तो हो गया. You can challenge it on certain other grounds, like कि censorship certificate has been issued wrongly. Fine, because it has a lot of violence, obscenity and a number of other things. ठीक है. K.A. Abbas versus Union of India. Pre-censorship film is justified. देखो, मेरा पहले वाला आप वक्तव्य पकड़ने की और समझने की कोशिश करो. कोर्ट इज टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द टू राइट्स. वन इज योर right to freedom and second is societal order. Now if societal order is always on the highest pedestal, if it is coming or coming in contravention with your right to freedom, then that would prevail. For example, Ramlila Maidan's case, right to sleep and their freedom to protest.
समझ रहे हो? तो कोर्ट ने बोला वो अनजस्टिफाइड है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर. तो आप लिख लो रामलीला मैदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The restriction is required to maintain the social order. Now we come to 1B. Assemble peacefully without arms. You can assemble peacefully, nobody can, but once the assembly becomes violent, then it could be disrupted. ठीक है, provisions are there in CRPC 133 onward that it could be disrupted. For example, अब mob है वो violent हो गया है, जैसा हमने देखा फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसमें जो है restrictions impose की जा सकती है. Restrictions मैं आपको लिखवा देता हूँ 19(1)(a) की भी और इसकी भी 19(2) में जो लिखी हुई हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अभी. ठीक है, तो assembly without arms is not a problem. You can hold meeting, you can take out procession, but once it becomes unlawful, then it could be dispersed. It could be restricted on two grounds: sovereignty and integrity of India and public order. Now 19(1)(c), that is एसोसिएशन फॉर्म करने का आपको राइट देता है, दैट इज टू बी रेड विद 19(4). 19(1)(c) इज टू बी रेड विद 19(4). ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट in 2011. आप आपको उसको ब्यूटीफुली अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, आप देखो आई कैन फॉर्म एन एसोसिएशन. ठीक है, मीन्स मेरा जो डेमोक्रेटिक राइट है या मेरी वॉइस है. आज पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फॉर्म होती है? अंडर दिस आर्टिकल. आज एनजीओज कैसे फॉर्म होती है? अंडर दिस आर्टिकल, बिकॉज दिस आर्टिकल परमिट्स यू. तो यू कुड से दैट इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी. फाइन, सो एक वर्ड लिख लो आप, लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज 19(1)(c). Furthermore, peaceful assembly, association is fine. Now you can move freely. You want to go to Bangalore, Calcutta, Hyderabad, Assam, Srinagar, nobody is going to stop you. But still, this right could be restricted. Subject to? Yes. आप नागालैंड में जाओ, ट्राइबल एरियाज में आप नहीं जा सकते. कीपिंग इन व्यू देयर कल्चर, हेरिटेज, देयर डिसिप्लिन, देयर लाइफ, यू कांट डिस्टर्ब. फाइन. और इफ यू विल गो, यू विल बी कॉट एंड दिस पॉसिबिलिटी विल बी किल्ड. तो यू शुड नॉट. फाइन, तो स्टेट कैन रिस्ट्रेन दिस. नाउ देखो 19(1)(d). यस, इसका एक ऑब्जेक्ट है, जो इंटरनल बैरियर है ना हमारे, उसको हम लोग जो है वो ख़त्म कर दें. सो एनीबडी बीइंग अ सिटीजन यू कैन मूव एनीवेयर, बट सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस विच आर कंटेन्ड अंडर 19(5). Now I come to the core 19(1)(g). It's very important, इसको आप समझ लेना. Now it guarantees you to carry on practice any profession or any occupation, trade or business. Fine. अब अगर मान लो मैं लिकर शॉप खोलना चाहता हूँ, for which a license is required, permission is required, then I need to fulfill. I cannot otherwise. I want to practice as a lawyer. The license is required from Bar Council. I want to practice as a doctor. जो मेरे को मेडिकल काउंसिल से लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है. ठीक है,
So there are certain profession and occupation which require certain kind of licensing from the government to regulate it. So you can't say that I would practice unless or until you meet out the criteria which has been laid down.